basically are starting the session again because we had some sort of technical issues. Very normal of it to happen during lives, especially. Here, Sidra Anwar, just to give a brief introduction, who she is. She is basically the head of human assets here in DevSync. Last मेरा जो session था, before Sidra I jump into any long introduction, I just want to give people a little bit background के why are we doing this or इसकी basis क्या थी. So last week basically we had this live audio session here at LinkedIn, and वहाँ basically we were tackling how do women thrive in the IT landscape. Or surprisingly, a lot of men also took part in that live session, and a lot of people had so many questions related to their career. They wanted guidance, and a lot of people personally reached out to me, and they wanted Sidra back here on LinkedIn to give them some career advice, especially belonging from the HA side. I feel like the insights you will give people will be very very informative and valuable. Okay. So before I stretch this too long, let's just head over to you, Sidra. Please give us your introduction, your journey to DevSing, and also a little bit that you would want people to know about you. Thank you, Soha. And guys, I'm really sorry for the inconvenience that happened. I just changed my room. It's a little dark, but I hope now the connection is fine. So, yeah, about me, I am Sidra, heading the HR team here at DevSync. If I talk about my background, so I have around 1 decade of experience in HR, and I have experience in almost all domains of HR. तो मैं previously यही बात कर रही थी कि when I started my journey, so मुझे itself लगता था कि HR is maybe about talent acquisition or operations, but once I started working and I got to learn that it has a versatile thing. यानी HR में जितनी चीज़ें आती हैं, this is something that is very very that's what makes it very core. Starting from how you are bringing the talent, because at the end of the day, for every company, their major asset is human assets. So bringing people and bringing all these strategies and approaches to motivate them, to retain them, to recognize them, to plan their rewards, everything comes under this umbrella. So my journey has been really amazing. So the topic that you guys have selected today, it's something that is really close to my heart, and I think based upon my experience, I can definitely share so many valuable insights. क्योंकि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो आई कैन रियली रिलेट दैट जब आप अपने ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में होते हैं और यू आर अबाउट टू कंप्लीट योर डिग्री, तो हर किसी को अपनी लाइफ में कुछ ऑप्शंस होते हैं. मेजोरिटी ने जॉब करनी है, कुछ एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और कुछ अपनी लाइफ में अपने पेरेंट्स के बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, एट एनी पॉइंट आपने लाइफ में जो भी अपने लिए चॉइस लेनी है, यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस ट्रांजिशन हैज़ टू बी स्मूथ. और उस ट्रांजिशन के कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं. So if you don't know about those prerequisites and if you are not following well, तो आपका बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है, आपको बहुत सारी डिस्टर्बेंस एंड ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, एंड ऑफ कोर्स दैट सम टाइम एंडेड अप मेकिंग यू डिसअपॉइंटेड. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग. तो वो कहते हैं ना कि आप अपना कंप्लीट एक होमवर्क कर लें कि यार मैंने कौन सा पाथ चूज़ करना है और उस पाथ के प्रीरेक्विजिट्स क्या हैं, मुझे क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है, क्या क्या चीज़ें लेट गो करनी है, कौन सी हैबिट्स हैं जो मुझे इम्प्रूव करनी है, किन चीज़ों को मुझे लेट गो करना है, who should be my mentor, how I am planning my next 5 year or 10 years, मुझे लाइफ में बनना क्या था, मेरी इंस्पिरेशन क्या है. So these are all the things that comes in everyone's mind, and these questions should be very clear when you are having the transitioning in your practical life. So thank you for bringing this topic on the table, and I hope I'll be able to guide you guys well. Yes, especially Sidra, I feel like it's very important for us to touch on it, especially from a person that has had like experience of a decade at this point. As a fresh graduate, if I talk even about myself, I graduated like not too long ago, and as much as it is nerve wracking to determine the 4 years of your life, just पे आप dedicate करोगे अपनी सारी studies को, it's even more confusing and frustrating after you graduate because
From that point onwards, you're really just on your own. University Right. में what happens is you have mentors, you have teachers, you have a circle, ठीक है, you have a path. सब आपका रोड मैप आपके लिए सॉर्ट हुआ होता है, आपने बस उसको फॉलो करना होता है. Suddenly now you're graduated after 4 years, and now what? So I feel like, especially this session will be so informative for the people that have like just graduated, या अभी भी confusion में है, and trying to figure out Yeah. okay, what's the way from here onwards. I think something we should touch upon, and something that I'm also excited to learn from you, is when you graduated, what were the challenges you faced, and क्या pipeline थी where you figured out, okay, this is what I'm going to opt for, and now 10 years later you're like literally the head of the HR department here at Tipsing. So please, like, let us know. Right. अच्छा जब मैं when I was graduating and I remember that I was in my last semester, so this thing was making me very anxious and curious क्योंकि वो 2 semester थे जिसमें मुझे अपने major subjects choose करने थे. एंड मेजर सब्जेक्ट्स में मुझे आई वॉज वेरी अनडिसाइसिव कि यार मुझे पाथ कौन सा लेना है लाइफ में. सो वेरी फर्स्ट थिंग द चैलेंज दैट वाज इन फ्रंट ऑफ मी वाज टू रियली डिसाइड कि कौन सा एरिया क्या है. मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कहा गया था कि जी सेल्स के लोग तो दे हैव टू गो अराउंड ऑल द टाइम, इनको तो बाहर जाना पड़ता है, ये तो कभी ऑफिस में बैठ के जॉब ही नहीं कर सकते, तो never go into sales. Then marketing people have to be very much extrovert, they have to be presentable, this and that, so maybe it won't suit to your personality, you're pretty introvert. अच्छा जी फाइनेंस की बात आ गई तो you're having you have to deal with lots of numbers, तो शायद ये भी इतना वर्क नहीं करेगा. तो HR एक ऐसी फील्ड है जो जी बहुत ज़्यादा फीमेल्स को सूट करती है. Somehow I chosen to believe without even having what you can say logical reasoning, यानी HR क्या है, क्यों मुझे ये चूज करना है. Somehow I thought कि maybe it would be fine. The only factor that inspired me was कि it is about human and essentially I'll be able to learn about it. बहरहाल मैं काफ़ी ब्लैंक थी. पहला चैलेंज तो ये था कि आई मीन ब्लैंक होना इट्स नॉट समथिंग दैट शुड बी द केस. इसके ऊपर आपको प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए. गो फाइंड पीपल, ऑल्दो आपके टीचर्स होते हैं लेकिन समटाइम कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोजर आपको उसमें से नहीं मिल रहा होता, लेकिन डू प्रॉपर रिसर्च, राइट. एंड व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय करियर, जब मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की थी तो इवन देन मुझे लगता था कि शायद आई एम गोइंग टू असिस्ट इन द रिक्रूटमेंट सर्विसेज or some operational matter, maybe that is what sums up my job well. लेकिन it took me a lot of time जब मैं उस कंपनी का हिस्सा थी and I was able to see कि लोगों के कितने ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं when you ask them, जब आप उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, तो एज ए नेचर आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है, इंगेज करना होता है आपने लोगों को. यू नीड टू गिव देम द पर्सपेक्टिव, यू नीड टू प्रोवाइड देम अ कंप्लीट करियर पाथ, वरना वो आपकी कंपनी में नहीं आएंगे, राइट. देन यू ऑनबोर्ड देम एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू टू मेक श्योर कि आपके लोग जो आपको कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, देयर फर्स्ट डे शुड बी मेमोरेबल डे ऑफ देयर लाइफ, राइट. सो योर स्ट्रैटेजी रिवॉल्व्स अराउंड दैट. देन यू हैव टू मेक श्योर कि जिन लोगों को आप ऑनबोर्ड कर रहे हैं आप उनके लिए रिवॉर्ड का पूरा स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं, क्या कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, उसके ऊपर क्या स्ट्रेटजी है. सो दीज थिंग्स वर प्रॉबली नॉट देयर. जब मैंने अपने करियर में स्टेप इन किया तो मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स करके इन चीज़ों को लर्न किया, राइट. सो आई वॉज नेवर रेडी फॉर दीज प्री रिक्विजिट्स. दूसरी चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई वो ये थी कि आप अपने करियर में एंटर होते हैं और आपको बहुत सारे मिथ्स सिखाए जाते हैं लाइफ में. ये इस तरह का है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि मुझे बाकी सारे फील्ड्स के बारे में बातें पता चली. टर्न्स आउट कि जब मैंने अपना ज़ाती एक्सपीरियंस किया मुझे पता चला कि यार यू कैन नेवर बी अ गुड HR प्रोफेशनल इफ़ यू डू नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ दिस थिंग्स. आपको अगर नहीं पता कि सेल्स कैसे चलती हैं, आपको नहीं पता कि कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, इफ़ यू डोंट नो आपकी कंपनी के फाइनेंसिस क्या हैं, कि आपकी कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव है, आपका रेवेन्यू टारगेट क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आपने कॉस्ट कहाँ पे मैनेज करनी है, आप प्रॉफिट कितना बनाएंगे, कितना आप ग्रोथ पे स्पेंड करेंगे, तो यू आर नॉट अ गुड HR प्रोफेशनल, राइट. तो मैं इस चीज़ को उसी तरह से रेप्लिकेट करूँगी कि व्हेन यू आर ग्रेजुएटिंग प्लीज़ अंडरस्टैंड वेल कि अगर आप एक कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं तो कंप्यूटर साइंस की वर्ल्ड क्या है,
इन चीज़ों को प्री रिक्विजिट्स आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी में जाना है। एंड मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की है कि जब आप फ्रेश ग्रेजुएट्स के साथ बात कर रहे होते हैं, आप उनको इंटरव्यू कर रहे होते हैं, तो पीपल हैव लॉट्स ऑफ चॉइसेस। नहीं जी, मैं ए आई एम एल में ही जाऊँगा, मुझे ए आई में ही जाना है, मुझे जो है ना वो पाइथन में जाना है, मैंने तो सारी ज़िंदगी जावा में ही जाना है, विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग कि योर डिग्री इज जस्ट अ फंडामेंटल थिंग। आपको वो कुछ रूट्स को बिल्ड करना सिखा रही है। प्लीज लर्न एवरीथिंग, राइट? डू नॉट गो इन टू दैट डिबेट कि मैंने कौन सी टेक्नोलॉजी स्टैक्स में जाना है। ये एग्जैक्टली वही डिबेट है जो मेरे साथ हुई थी कि मार्केटिंग में जाना, सेल्स में जाना। नो, अप्रोच वॉज लर्न एवरीथिंग, मेजर किसी एक में करें, बट डू नॉट डिस्करेज एनीथिंग। यानी इट विल नेवर एवर चेंज द कॉन्सेप्ट। अगर मैं बीइंग एचआर आज भी सेल्स लर्न कर रही हूँ एंड आई एम running my startup, so how is it possible? Because I am able to learn everything, right? Same goes for you. If you're an IT graduate और आपने अपना करियर किसी IT कंपनी में स्टार्ट करना है, प्लीज फोकस ऑन बिल्डिंग योर फंडामेंटल्स। और आपके वो फंडामेंटल्स आपके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं। जब आपने उनको बिल्ड कर लिया, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग है, तो आप उसके ऊपर अपनी बिल्डिंग को भी बड़ा कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज चेंज योर टेक स्टैक्स, राइट? और जितनी मार्केट आजकल वॉलेटाइल है, टेक स्टैक्स तो बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं। अगर आप एक ही टेक्नोलॉजी के साथ स्टिक रहे हैं और आपने अपने आप को बिल्कुल अडेप्टेबल नहीं किया चेंज करने के लिए, तो यू विल बी आउटडेटेड, राइट? कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि चैलेंजेस क्या थे और मैंने उन्हें कोप कैसे किया। चैलेंजेस यही थे कि आप बगैर किसी लॉजिकल रीज़न के चीज़ों की मिथ्स पे बिलीव करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं करते और कभी भी अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट नहीं करते। दूसरा जो बिगेस्ट ऑब्स्टेकल मैंने फेस किया लाइफ में, वो ये था कि व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय प्रोफेशनल लाइफ, तो आई ऑलवेज इग्नोर्ड द वैल्यू ऑफ नेटवर्किंग। आपका एक इंटरनल नेटवर्क होता है और आपका एक एक्सटर्नल नेटवर्क होता है। many people who are sitting around you in the company, many time it happens कि यार आपने अपनी ना जॉब स्टार्ट की, 4 लोग आपको पहले दिन अच्छे नहीं लगते, 2 दिन आपको 2-3 लोग आपको अच्छे लग रहे हैं और हम अपनी ओपिनियंस बिल्ड कर लेते हैं। जस्ट नेवर डू इट। ऑलवेज क्वेश्चन योर सेल्फ कि मेरा ये जो बिहेवियर है ये ऐसा क्यों है, राइट? एंड काउंटर योर सेल्फ। यू शुड नेवर डू इट। इफ यू आर स्टेप्ड इन टू योर ऑफिस, ट्राई टू ऑब्जर्व कि जो आपके सीनियर्स हैं, जो आपसे पहले वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके पास क्या कॉम्पिटेंसीज हैं, क्या स्किल्स हैं, क्या एक्सपीरियंस है। स्पेयर योर टाइम, हैव अ टी विद देम। ठीक है, हम कभी भी अपने जोन से बाहर नहीं निकलते। आई यूज टू मेक दीज मिस्टेक्स, बट लेटली आई रियलाइज कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपको यू गॉट टू इन्वेस्ट। अपने सीनियर से लर्न करें, एक्सटर्नल नेटवर्क में अपने उन फैलोज के साथ बैठें जो दूसरी कंपनीज में गए हैं। ठीक है, तो अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ की ट्रांजिशनिंग की बात करें, तो नेवर एवर अंडर एस्टिमेट दीज थिंग्स। ऑलवेज इन्वेस्ट इन योर नॉलेज। अच्छा, अब आपने डिग्री कर ली, मेनी टाइम इट हैपन्स कि जो कंपनीज का जो की रिक्वायरमेंट्स होती है दैट वेरीज, राइट? आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएट तो कर लिया, लेकिन कुछ कंपनीज होंगी जो प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं, कुछ कंपनीज जो है वो सर्विसेज पे काम कर रही हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्विसेज के डायनामिक्स क्या होंगे और प्रोडक्ट के डायनामिक्स क्या होंगे, एंड देन बी अडेप्टेबल। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप आएँ, आपको प्रोडक्ट की कोई लैंग्वेज समझ नहीं आ रही एंड यू स्टार्ट ब्लेमिंग योर टीचर्स। ओहो, देखो ना, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, हमें तो सिखाया ही नहीं गया, हम तो यू वो विक्टिम कार्ड वाली स्टेट में चले जाते हैं हम, बिल्कुल। यू स्टार्ट ब्लेमिंग एवरीवन अराउंड यू इंस्टेड ऑफ पुटिंग सम सेल्फ एफर्ट। Always have an aptitude of a problem solver. Always have an aptitude of going extra mile. Take the ownership of yourself. अगर आप एक जॉब पे गए हैं, सबसे पहले जाके समझें कि आपका रोल है क्या, व्हाट आर दे एक्सपेक्टिंग। टॉक टू योर लीड। ठीक है, अगर वो आपसे आपकी मर्जी के मुताबिक बात नहीं कर रहा, टॉक टू देम एंड टेल देम। बी ओपन इन योर कम्युनिकेशन। उनको बताएं कि यार आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड। अच्छा, कुछ लोगों के को ये मसला होता है कि हमें टाइम नहीं दे रहा। देर इज़ ऑलवेज अ राइट वे टू इवन आस्क फॉर टाइम, राइट? जाके कहें उनसे कि यार दिस आई वुड लाइक टू हैव योर 15 minutes एंड आई वुड लाइक टू डिस्कस दीज थिंग्स, एंड डेफिनेटली द पर्सन वुड हेल्प यू। जस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी जॉब की डिमांड क्या है। उसके बाद आप उसको स्टडी करें, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पता है, कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, और उनसे वे फॉरवर्ड लें। टॉक टू योर फेलोज, टॉक टू योर कलीग्स, दे विल हेल्प यू इन गेटिंग सेटल। तो ये जो मिथ है ना कि मेरा एक करियर का ट्रांजिशन हुआ है
और लाइफ में मेरे पास हर चीज़ बनी बनाई है, दिस इज़ नॉट ट्रू। यू आर सपोज टू डू एक्स्ट्रा माइल एफर्ट, क्योंकि अगर मैंने आज 20 लोगों को ऑनबोर्ड किया है, 20 लोगों की लर्निंग कैपेसिटी फ़र्क होगी। ठीक है, मेरा एक मेथड होगा, आई विल ट्राई टू स्टार्ट दैट ओरिएंटेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, बट हर पर्सन की एक लर्निंग कैपेसिटी फ़र्क होगी। बी वेरी रेडी एंड ओपन टू रियली लर्न दीज थिंग्स और खुद से अडेप्टेबल। Hmm. Honestly, Sidra, you touched upon everything and anything that I was, about to ask. And I feel like it's very great that you actually touched on, the importance of networking, having a very adaptive personality, and also just making sure that you are open to the fact of expanding your horizons. I feel like, as a person that has, I am, in touch with a lot of my friends, and we are fresh graduates. Okay, so one thing that I've seen is the mistake we make is being very persistent on that one thing that we're focusing on. So again, if you want to do like my marketing perspective से बात करूँगी, if there's like somebody जो कि they're like मैंने marketing ही करनी है, and they're not open to the fact कि maybe we can also explore the public relations side of it, we can explore the advertisement side of it, we can explore the communication side of it. I feel like if you are persistent at one place, you are also limiting yourself at this one place, and जो भी opportunity आपको दी जाएगी आप उसको explore नहीं करेंगे, and also you won't really open more doors for you. So I feel like it's very important to have the mindset to expand your skill set and always adapt to what's been given to you. अच्छा, since you already kind of touched upon it, I feel like कि हम इसकी depth में भी जा सकते हैं. अच्छा, before I actually ask the question, guys, first of all, thank you so much जितने भी लोग जिनने हमें join किया हुआ है. Secondly, we are taking questions. This whole session is about answering your questions. Anything you're curious about, so please do drop the questions. Also, I would encourage थोड़ा से one-liner questions आप लोग कर ले. I do see a lot of like interesting questions जिसको हम tackle करते हैं. बट फर्स्ट लेट्स जस्ट मूव टू दिस कि अच्छा, डिग्री ले ली है हम लोगों ने, ठीक है, एक फ्रेश ग्रेजुएट डिग्री ले ली है. What are the soft skills when it comes to finding the right job that you feel like कि अगर ये एक fresh graduate adopt कर लेना, the process of finding a place they belong to career wise would be a smooth process and would be an amazing process for them, because what we do as young people is we get traumatized, honestly, and it's not a bold statement to say this, because I've seen my fellows being depressed on not finding the place where they belong career wise. So what is your insight on this? What would you suggest? Okay, I think these are two questions. One is the you asked about soft skills that Yes. everybody should have and should be ready when you have to jump into the career. And second thing would be कि how to really target the right job Yes. जिसके लिए जिसका आप बेस्ट फिट हैं. तो टू स्टार्ट विद, अगर मैं बात करूँ आपकी स्किल सेट की, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपकी ओवरऑल जो मार्केट डायनामिक्स है, इंडस्ट्री है, वो किस तरह से वर्क कर रही है, चाहे वो आईटी है चाहे वो नॉन आईटी है. और अगर मैं पर्टिकुलरली आईटी की बात करूँ तो एवरीबडी नोज दैट दिस इज़ अ ग्लोबल इंडस्ट्री. द क्लाइंटेज इज़ फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. तो यू हैव टू लर्न एटलीस्ट दैट स्टैंडर्ड लैंग्वेज जिसमें कम अज़ कम आप कम्युनिकेट कर सकें. बहुत सारे लोग इस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश. आई बिलीव इट्स मच मोर देन दैट. आपको थोड़े से कम्युनिकेशन में इंटरपर्सनल स्किल्स आती हैं आपकी, राइट. यू गॉट टू पर्सनली कनेक्ट एंड एंगेज विद योर ऑडियंस. जैसे आपका एक क्लाइंट है, वो द क्लाइंट इज़ फ्रॉम यूएस, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार 25th को वो क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे. और अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो आपने कब उनके साथ सॉफ्ट लैंग्वेज यूज़ करनी है, कब उनके साथ आपने बड़ा प्रोफेशनली एक्ट करना है, वर्सेस यू आर जस्ट सेइंग इंग्लिश, राइट. So your tone has to be very with lot of conviction, and that demands certain confidence. आपने अगर आईटी में जंप इन करना है, प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग अबाउट कि आपकी आईटी में जो कंट्रीज़ हैं वो यूजली मिडल ईस्ट है, यूरोप है, प्राइमरली यूएस है, यूके है. इन सारों के डायनामिक्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करें कि कंट्रीज़ क्या हैं, इनकी इकोनॉमी क्या है, जिस इंडस्ट्री को आप टारगेट कर रहे हैं वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ किस तरह की हैं, सो दैट यू कैन टॉक. सेकेंड, प्लीज़ बी वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन.
लर्न इंग्लिश, और थोड़ा सा सॉफ्ट साइड को लर्न करें, दैट इफ़ यू हैव टू से good morning, what can be the good way, if you have to leave a call and how to make an excuse, if things are, if you're able to if you're not able to fulfill the commitment of your client, how to nicely say it. तो ये चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, और उसके बगैर आप लोगों को कनेक्ट या एंगेज नहीं कर सकते. सो कम्युनिकेशन इज़ द प्राइम थिंग. एंड सेकेंडली, प्लीज़ लर्न टू बी कॉन्फिडेंट, राइट. अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, सो यू विल ऑलवेज बी एंडिंग अप बिकमिंग अ पर्सन जो दूसरों से बस एग्री कर लेता है या डिसएग्री कर लेता है विदाउट बीइंग लॉजिकल. और ये तभी होता है व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. सो ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट. और आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है आपकी नॉलेज और आपकी स्किल्स पे. ऑलवेज इन्वेस्ट. आपने जो जॉब टारगेट करनी है, जिस इंडस्ट्री में आपने जाना है, आपका नॉलेज 2 पॉइंट हो. You are confident only when you are saying the right thing. Otherwise, you will always be, confused. So, अगर मैं सॉफ्ट स्किल्स की बात करूँ तो फोर्थ थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ टू बी प्रोफेशनलिज्म को थोड़ा लर्न करें. प्रोफेशनलिज्म क्या है? व्हेन यू स्टेप इनटू अ कंपनी, आपके एज अ इंडिविजुअल आपको कैसे एक्ट करना है, एज अ टीम मेंबर आपको कैसे एक्ट करना है, इफ़ यू आर अ सीनियर हाउ टू एक्ट, if you're junior, if you're subordinate, to how to act. आपके पास एक कंप्लीट इकोसिस्टम है. अगर आपने वहाँ पर किसी से ये कहना है कि प्लीज़ मुझे चाय ला दो, तो उसका भी देयर इज़ अ राइट वे, राइट. सो प्रोफेशनलिज्म को लर्न करें. कौन सी बाउंड्रीज हैं जो ऑफिस में आपको क्रॉस नहीं करनी, पॉलिसीज़ क्या हैं, किस तरह से कॉर्पोरेट लाइफ वर्क कर रही होती है. टॉक टू योर HR, उनसे बात कर लें, किसी HR प्रोफेशनल से कनेक्ट हो जाएं, इसके बारे में अंडरस्टैंड करें. तो प्रोफेशनलिज्म इज़ अ बिग थिंग दैट creates a big and huge difference. And learn to be adaptable. Always question yourself जहाँ पर आपको लगे कि आप बिला वजह rigid हो रहे हैं. Never be a rigid, because we are a fresh grad. आपने अभी enter होना है, तो जो चीज़ आपको बताई जाए, आपको दे दी जाए, हमेशा उसमें एक प्रॉब्लम सॉल्वर का एटीट्यूड लेके उसको लर्न करें, रादर कि यू आर क्वेश्चनिंग ऑल द टाइम एंड यू आर नॉट लेटिंग योर सेल्फ टू बी इन एंड लर्न दैट थिंग. So I think ये कुछ soft areas, soft skills है, particularly that where everyone should work. Second thing is that how to target the right job. I think there used to be जब when I started my career, तो उस टाइम पर हमारे जो local job boards थे, they were the you know uh, acceptable sources, या वो बहुत ज़्यादा in demand थे. रोज़ी की बात कर लूँ, Indeed की बात कर लूँ, but now LinkedIn is everywhere. So you should search those companies. थोड़ा सा रिसर्च करें, देखें कि IT कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज हैं दैट यू कैन टारगेट, और वो किन किन टेक स्टैक्स में काम कर रही हैं. मे बी जाते के साथ वो आपको एकदम एक टेक स्टैक में नहीं काम देंगे. दे विल वर्क ऑन योर ट्रेनिंग, दे विल वर्क ऑन योर स्किल्स टू बिल्ड सम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स. बट एटलीस्ट सी कि मैं वहाँ पर अगर साल 2 साल 3 साल स्पेंड कर रहा हूँ, तो व्हाट वुड बी माई करियर प्रोग्रेशन विद देम. एंड दिस सर्च विल गिव यू द आंसर दैट दिस इज़ द कंपनी वेयर आई बिलोंग. एक तो चले आपका टेक्निकल एबिलिटी, टेक्निकल स्किल्स है, आपका करियर पाथ है. सेकेंड थिंग वुड बी ऑफ कोर्स द कल्चर ऑफ द कंपनी, द पीपल दैट ऑलरेडी वर्किंग इन द कंपनी. क्योंकि आपका अगेन, जैसे मैंने पहले बात की, आपका नेटवर्क बड़ा मैटर करता है. किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, दैट एड अ लॉट ऑफ वैल्यू. सो डू हैव अ प्रॉपर रिसर्च. इसको प्रॉपर जब आप रिसर्च करेंगे, यू विल गेट योर आंसर. एंड देन ऑफ कोर्स स्टार्ट अप्लाइंग देयर. और अप्लाई करने के भी मल्टीपल तरीके हैं. मतलब यू डोंट हैव टू ऑलवेज थ्रो योर CV इन द होल क्राउड. देर आर सो मैनी वेज वेयर यू शुड कनेक्ट विद द सीनियर्स ऑफ द कंपनी जो आपको रेफर कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि एवरी कंपनी प्रेफर्स अ लॉट टू देयर रेफरल्स. और रेफरल का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको जॉब ऑफर कर देंगे. इट्स जस्ट इट मेक्स एन ईजी वे टू एटलीस्ट आपका CV पहुंच जाता है एक राइट पर्सन के पास. एंड it becomes the process easy for you. It gives you a fair opportunity to land in the interview. Okay, so this is how you can really target. Honestly, so they're very well answered because again, as before, I was about to ask you कि especially क्योंकि हमारी अप्रोच होती है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट्स के हम अपनी CV को ब्रोशर की तरह फेंकना शुरू कर देते हैं इधर उधर, वो तो एंड इट्स अ जोक विद इन दिस यंग कम्युनिटी के जैसा फ्लायर्स फेंके जाते हैं घर में किसी रेस्टोरेंट ओपनिंग में, तो वी शुड जस्ट डू दैट. But I feel like it's really an art of selling yourself, your skill set, and also like making sure that you are the one being considered.
अच्छा कि एक तो हमने बात कर ली कि आफ्टर यू ग्रेजुएट तो these are the steps you will take. There is one question, and also before we got disconnected from our previous life, somebody asked कि internship की क्या value होती है? When you are, जब हम लोग अपनी degrees के दौरान होते हैं, we have these 4 years, उसमें 4 दफा we have a summer break, right? खैर चौथी में तो we are looking for a job, but these 3 summer breaks, somebody like takes up any internship. What would you suggest to kickstart your career? What kind of internship? हम आईटी पे चलें, ये क्वेश्चन बेस कर लेते हैं कि जो आईटी रिलेटेड बच्चे होते हैं, what kind of internship should they look into, and also how is it how it benefits them when they are actually on a job hunt? Internship has a lots of value. I think जब आप you're studying, it's always I will always encourage कि आपको कहीं भी काम करने का मौका मिले, वो फ्री मिले, वो पैसों वाला मिले, please never let it go. I started my career being an intern in a company, and I was really, then being hired there as full time employee. I think internship में बहुत सारे लोगों का सवाल होता है, 1 महीने में क्या हो जाएगा, 2 महीने में क्या हो जाएगा. 1-2 महीने की बात नहीं होती. These 1-2 months are giving you the amazing opportunity to work in a practical environment and to build your connections. और of course साथ में आप learn भी करते हैं. So when you are अब इंटर्नशिप ढूंढनी कैसे. ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म्स आर वेरी सिंपल. हर कंपनी अपने अपनी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़, अपने प्रोग्राम्स को अनाउंस करती है. पार्टिसिपेट करें. लुक फॉर द कनेक्शन दैट कैन हेल्प यू टू लैंड देयर एंड देन गो देयर. एंड वो चाहे 4 हफ्ते की है, चाहे वो 6 हफ्ते की है, चाहे वो 3 months की है. नेवर से नो, क्योंकि अनलेस यू हैव सो मेनी चॉइसेस, राइट. लेकिन अगर आपके पास एक चॉइस है और वो आपसे कह रहे हैं कि यार यू कैन डू इंटर्नशिप बिटवीन योर ग्रेजुएशन और मे बी आफ्टर ग्रेजुएशन, इट्स ऑलवेज अ प्लस. इट ऑलवेज एड वैल्यू. अगर आप लेट्स से कोई स्किल ना सीख सकें तो आप एटलीस्ट एक प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं. हाउ पीपल स्टार्ट देयर डे, हाउ पीपल एंड देयर डे. जब लोगों के डेडलाइंस होते हैं, हाउ दे एक्ट इन द प्रेशर, हाउ दे कनेक्ट विद द टीम मेंबर. कितनी सारी चीज़ें अनसर्टन हो जाती हैं यार. आपकी डेडलाइन थी, आपने टास्क कंप्लीट करना है, और ऑल ऑफ सडन एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, राइट. एंड यू आर नॉट एबल टू मीट. फिर उस टाइम पर आपका बैकअप प्लान क्या होगा. तो ऑब्जर्व करें, राइट. व्हेन यू विल ऑब्जर्व यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स. दूसरी, आपकी एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है. दीज पीपल कैन लेटर हेल्प यू इन लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स, and of course in maybe ending up on a better opportunity. So never ever say no to any internship. If you're getting one opportunity, please go for it. Yeah, I feel like as it's again वही वाली बात है कि especially जब you're not even like into the job environment, you're not into a corporate dynamic, and you're not committing necessarily to it, because जाहिर सी बात है आपके degrees के साथ काफी मुश्किल हो जाता है. But I feel like having the opportunity to be able to observe it for a temporary time, I feel like it's very beneficial. And again, you guys should go for it if you're still in middle of your degrees. अच्छा, we have a very interesting question, Sidha. फैज सुल्तान ने हमारे YouTube चैनल पे कमेंट किया है, and he's asking कि would you hire a person without a CS degree but have competitive skills? So I'm assuming कि जो लोग probably directly CS से belong नहीं करते, there are a lot of courses they take, and some people honestly just code for passion. ठीक है. So what is your take on it? Because I'm pretty sure, heading the HA department, there are multiple people that might, ask this question, and आपको मिलती भी होंगी ऐसी resumes. बिल्कुल ऐसा है. If your question is कि I do hire people without the relevant degree, yes I do, based upon their experience and the relevant skills. Even fresh graduations में भी हमने अगर software engineer hire करना तो we hired a lot of people with double E background as well. Electrical engineering, computer engineering, electronics के background में, proven fact के साथ कि if they have justified their skills. So yeah, skills have bigger weightage than the relevance of your degree. Your degree is of course matters a lot क्योंकि उसने आपको एक fundamental knowledge देना है. लेकिन अगर आपने अपनी skill के ऊपर काम किया है, then of course you can learn. Okay, Ajay Siddha, let's just take also an interesting comment from Zishan Zafar.
I feel like it's very important कि हम इस तरह की चीजें भी साथ acknowledge करें. We can always, Of course. normal questions को भी कर सकते हैं, but I feel like questions like these are also very, they can give it very insightful input. अच्छा, ही इज आस्किंग कि व्हाई जो अनपेड इंटर्नशिप्स होती है उनको बेसिकली इनकरेज नहीं करना चाहिए, बिकॉज काफी छोटी कंपनीज जो होती हैं वो इन इंटर्नीज का फायदा उठाती हैं. So, with your experience and what you have seen so far, can you please enlighten us कि unpaid internships का क्या फायदा होता है? Is it really just, exploitation? अच्छा, मैं हमेशा से इस फैक्ट की बिलीवर हूँ कि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, राइट? आप लाइफ में कुछ नहीं कर रहे, आप फ्री हो गए हैं या आपकी समर ब्रेक वेस्ट जा रही है और चले अगर तो आपको पेड इंटर्नशिप मिल रही है, आई एम नॉट एक्चुअली इनकरेजिंग कि इंटर्न्स को पे ना किया जाए. ऑफ कोर्स हर कंपनी की पॉलिसी है एंड दे मस्ट बी पेड टू द डिग्री कि वो कम से कम अपने मिनिमम एक्सपेंसेस को मीट करें, कंपनी में आना जाना, अपने खाने को और एवरीथिंग. बट लेट्स से इफ दैट्स नॉट द केस बाय द कंपनीज एंड, तो फिर इट्स योर चॉइस. आपको देखना है कि इफ इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, इट इज़ नॉट एडिंग वैल्यू, मे बी नॉट, डोंट गो फॉर इट. बट अगर अगर आप ऐसे पर्सन है हु इज़ लाइक इन थर्ड फोर्थ सेमेस्टर और मे बी अबाउट टू ग्रेजुएट और उसके पास अभी कोई और ऑप्शन है नहीं, then it's always better to go and work, maybe take it as in your investment. आपने अपनी यूनिवर्सिटी को भी तो इतनी सारी फी पे की है ना, 1 महीने 2 महीने काम कर लें यार. इट विल एड अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. वरना कोई भी कंपनी आपको कभी अलाउ नहीं करती कि आए बैठें हमारे साथ काम करें. नोबडी अलाउज यू. इंटर्नशिप इज अ प्रैक्टिकल वे to really get yourself engaged with the company. मेरे पास लेट्स से पोलैंड से we had an intern. अब वो पोलैंड से आए हैं, वो जहाँ से मर्जी आए. If he was not officially there as a part of our team, so I would not have allowed him to learn from me, right? He worked with us, he was able to set in the team. तो दिस एक्सपीरियंस समथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको बगैर एक्सपीरियंस किए नहीं मिल सकता. तो आपको अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग देखना है. ऑलवेज गो फॉर पेड इंटर्नशिप. लेकिन अगर आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी अभी नहीं है तो जो अवेलेबल है कम से कम उसको अवेल कर लें. Exactly. I feel like he is right jahan it comes to exploitation, but I feel like if for the time being there is really no learning place for you, might as well just avail what is being offered. And also, like, if you have the self-awareness, this might exploit me, this might waste my time, then make your decision. Yeah. You have the cognitive abilities, make it. And if you want to influence others, do that. But at the end of the day, what step you take for your career is going to, some like influence how you go forward. Yeah. Acha, we have another question. It's quite long. Basically, he's asking कि I'm a fresh graduate in software engineering and going to start project management professional physical classes. After completing this, can I avail an intern project coordinate, PMO analyst, and become a project coordinate or project manager in the IT industry? अच्छा, अगर तो सिर्फ क्वेश्चन ये है कि कैन आई बिकम, ऑफ कोर्स बनने को तो आप कुछ भी बन सकते हैं, बट उसको बनने के लिए देयर इज अ सर्टेन पाथ दैट यू नीड टू टेक. इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड यू वांट टू गो इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो यस, यू विल स्टार्ट योर करियर एज अ सिंपल प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर. उसकी बहुत सारी पोजीशंस अवेलेबल होती हैं. यू कैन इवन स्टार्ट एज एन इंटर्न एज वेल. और एज अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यू विल लर्न अबाउट इट कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की व्हाट यू कैन से मेथोडोलॉजीज क्या हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी क्या है, वाटरफॉल मेथोडोलॉजीज क्या हैं, और इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके अंदर टूल्स क्या हैं. तो अगेन मेरी सजेशन ये है कि इफ़ यू वांट टू टेक दैट रूट और दैट पाथ, आपने एक डिग्री की है, आपने उसके अंदर सर्टिफिकेशन कर ली है, do take some online courses. Just be very strong in your concept. That helps you to be land for a good opportunity, and you can start your career. Obviously manager ke liye to you have a certain types of skill set, competencies, and certain years of experience, but you have to take a start from the position of maybe project coordinator to start with. All right. Also, Sidra, we also have another question. Very interesting marketing related, and also very passionate to give my input and also listen to yours first. Acha, Sure. Islam Shaukat is asking, is it necessary for to learn multiple skills such as development with SEO optimization and marketing? Some argue that multitasking is an individual effort, while development, marketing, and sales require teamwork. Share your perspective on this. अच्छा,
यहाँ पर हर पर्सन की अपनी ओपिनियन है, और यूजली पीपल ऑन देयर सर्टन लेवल ऑफ करियर हैव डिफरेंट ओपिनियंस टू शेयर विद. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं हमेशा से इस बात की बिलीवर हूँ दैट लर्न एज मैनी एज स्किल्स यू कैन. जब मैंने आई वॉज डूइंग माई आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, और मेरी जो माई मेजर सब्जेक्ट्स वर इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, एंड आई डिड टू मेजर्स. एंड देन जब मुझे HR में जाना था तो आई स्टार्टेड माई MBA राइट आफ्टर दैट. तो मॉर्निंग में मैं MBA कर रही होती थी, और सॉरी, मॉर्निंग में मैं जॉब कर रही थी और इवनिंग में मैंने अपना MBA स्टार्ट किया था. और जो मेरी जॉब थी दैट वाज अ कंटेंट राइटिंग जॉब, राइट. आई स्टार्टेड माय करियर एज अ कंटेंट राइटर, एंड दैट वाज जस्ट टू लर्न समथिंग विदाउट इवन थिंकिंग, गिविंग मच थॉट कि अच्छा ये क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन मैं ये बात आज भी कह सकती हूँ कि माई दैट नॉलेज इज नेवर वेस्टेड. उस कंटेंट राइटिंग ने मुझे ये सिखाया था कि SEO के लिए कंटेंट आपने कैसे लिखना है, राइट. और उसमें मार्केटिंग किस तरह से अटैच है, हाउ दिस कंटेंट इज हेल्पिंग देम टू रैंक देयर वेबसाइट एंड टू जनरेट सेल्स फॉर देम, राइट. और अगर मैं आज एक HR प्रोफेशनल हूँ तो ऑब्वियसली दैट इज हेल्पिंग मी टू. सो ऑलवेज गो फॉर लर्निंग मल्टीपल स्किल्स, लेकिन ऐसा भी ना हो कि यू आर जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, राइट. आपको अपना टाइम लेना है. यू नीड टू लर्न. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी बात कर रहे हैं कि यू वॉन्ट टू बी एन SEO स्पेशलिस्ट, SEO स्पेशलिस्ट बने, लेकिन उसके साथ डायनामिक्स को लर्न करें कि SEO के साथ मार्केटिंग में SEO कहाँ हेल्प कर रही है. ऑब्वियसली वेबसाइट इज़ द प्राइम थिंग. वेबसाइट की रैंकिंग क्यों मैटर करती है लोगों को, क्योंकि जब भी क्लाइंट आपके सर्विस को या आपके प्रोडक्ट को सर्च करेगा तो वेबसाइट एक प्राइम टूल है. तो उसका अच्छा होना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट विल हेल्प द कंपनी टू जनरेट सेल्स लीड. तो अगर ये नॉलेज आपको नहीं होगा तो आप कभी अच्छे SEO स्पेशलिस्ट नहीं बन सकते. एग्जैक्टली वही बात है कि अगर आपने एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है और आप कहें कि मैं अच्छा कोड करता हूँ लेकिन मैं अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं हूँ, तो यू विल ऑलवेज बी एंडिंग अप अ पर्सन जिसको बस कोडिंग आती है. वो कभी भी स्मार्ट कोडर नहीं बन सकता. और the world is demanding not hard workers but smart workers. So be very smart in your approaches and learn as many as knowledge, क्योंकि everything is relatable. आप किसी भी डोमेन के स्पेशलाइज्ड हो जाए, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि वो चीज़ रेलेवेंट नहीं है दूसरी किसी भी डोमेन के साथ. Also, I feel like IT landscape, marketing, and honestly, at this point, majority जितनी भी हमारी domains हैं, they're so fast paced, and the way they're developing each and every single day is insane. But at the same time, what we can learn from it is कि हाँ ठीक है, it's only human to get overwhelmed, it's only human to have imposter syndrome and be like maybe I cannot catch on to it. But also, like, it's only right for you to be accepting of the change, the evolvement in these domains, and also letting yourself explore new things, learning new things, and adopting to it. Because again, जैसे हमने हमारे initial question में हमने बात की थी कि चेंज आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, चेंज आपको अडेप्टेशन आपको अपॉर्चुनिटीज देती है. सो इन द एंड ऑफ द डे it is your mindset that will lead your career to a path that maybe necessarily you always wanted. अच्छा, so let's jump into another question. Husnain Ahmed ने LinkedIn पे basically comment किया हमारे. He is asking कि जो machine learning and AI, it has a lot of not a lot of, actually limited opportunities. So should a person switch towards web development या anything? Basically वही कि जो जिस चीज़ पे वो काम कर रहे हैं उस पे बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज हैं, अब उसको स्विच किया जाए, जैसी टेक स्टैक की हम लोग बात करते पहले एंड एवरीथिंग. सो अच्छा, आई विल नॉट एग्री कि अपॉर्चुनिटीज़ कम है. आई थिंक एवरीवन, ये तो लोगों की एक पेट लाइन बन गई कि आज AI का दौर है, AI का दौर है. तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ इसमें है नहीं. यू जस्ट नीड टू सी, यू मे बी नीड टू एक्सप्लोर सर्टन प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलें. और दूसरी बात ये कि इफ़ यू वांट टू गो फॉर वेब डेवलपमेंट, तो या दिस इज समथिंग दैट इज़ नेवर गो आउट ऑफ ट्रेंड. तो यू जस्ट नीड टू से कि वेब डेवलपमेंट के अंदर भी कौन से ट्रेंड है, डू यू वांट, वो ट्रेंड्स क्या हैं, एंड हाउ यू कैन रिलेट योर स्किल्स, राइट. अब ऐसा नहीं होता है कि आपने अगर एक स्किल पे जंप करना है तो वो 380 डिग्री ही डिफरेंट होगा. इट्स नॉट पॉसिबल. सो यू शुड मे बी स्टार्ट
grabbing and learning all the opportunities जो उससे near around हो, and that can help you to build your knowledge capacity. So I think that's how you should decide based upon, और more importantly आपका अपना इंटरेस्ट किस तरफ जा रहा है और आप किस तरह से अपने इंटरेस्ट को ट्रेंड्स के साथ रिलेट कर रहे हैं. So that's how you can figure it out. Acha, that answers the question. I feel like I hope you guys are, in case we've missed out any aspect that you guys are, wondering about. We don't really take it personally. Point it out. This whole session is out there for the fresh graduates जिनको अपने career में help चाहिए, advice चाहिए, and really the best person that can answer all of your queries is Sidra. She meets a lot of people on the daily basis who are very eager to get into the IT landscape and want to be a part of it. Acha Sidra, again a very interesting question, and also like when I'm looking at DevSync pages, and when we're like the team is going through the DMs and stuff, a lot of people ask, कि, Acha, we don't necessarily have the best GPA, right? And again, it's a burning question as well, and that is what excites me also for the answer. Okay, we don't have the good GPA. How does that reflect वो फिर किसी भी आप कह लें किसी भी कंपनी के लिए बेसिकली हाउ डज दैट रिफ्लेक्ट माय रेज्यूमे वो मुझे किस स्कूल में डाल देता है मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज को कितना नैरो कर देता है डज स्किल मैटर या जीपीए मैटर तो प्लीज पुट दैट इनटू द डिबेट और कंट्रीब्यूट व्हाट यू ठीक है. अच्छा, अगर तो आप मुझसे सिर्फ कॉन्सेप्ट की हद तक पूछें तो जीपीए मैटर और स्किल मैटर, ऑफ कोर्स स्किल्स मैटर. बट यू आस्क मी कि प्रैक्टिकल ग्राउंड वर्क कैसे करती है. प्रैक्टिकल ग्राउंड ऐसे वर्क करती है कि I don't mind considering people who are having very less CGPA. Even I would love to give them a fair chance. But when I have a pool of let's say thousands of people, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने अगर 10 लोग हायर करने हैं 20 लोग हायर करने तो मैं कहूँगी यार 2000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला लें. Right? I have to put some filters on it to screen people कि who are the ones जो first priority में जाए. अब ऑब्वियसली जिन लोगों का CGPA, लेट्स अगर मैं टेक की बात करूँ, इफ पीपल आर एबल टू गेट गुड स्कोर्स इन द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, इन द प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स, तो मैं उस बेस पे कुछ स्क्रीनिंग कर लूँगी. कुछ वो लोग होंगे जो बेस्ड अपॉन उनकी रेलिवेंट डिग्री है, उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया या नहीं, बिकॉज दिस रिफ्लेक्ट्स अ लॉट about your communication, about how social you are, how confident you will be. तो मैं कुछ पैरामीटर्स सेट करूँगी एंड आई विल स्क्रीन द सीवीज एंड आई विल से कि ठीक है ये जो फर्स्ट 200 या 300 लोगों की पाइपलाइन है, आई एम गोना कंडक्ट द इंटरव्यूज फॉर दीज पीपल और आई एम गोना कंडक्ट अ टेस्ट फॉर दीज पीपल. राइट? तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि यार मैं एक बहुत बड़ी मार्केट कंपेटिटिव जगह पर खड़ा हूँ एंड आई एम नोबडी राइट नाउ. मतलब इतने सारे थाउजेंड्स ऑफ लोग हैं, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इतने सारे लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, एचआर का पर्सन मुझे ही क्यों चूज करे. आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ एंड यू विल गेट द आंसर. ऑब्वियसली वो सर्टेन पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स में आपका सीजीपीए वुड बी द वन, क्योंकि सीजीपीए रिफ्लेक्ट्स अ लॉट अबाउट यू कि आप कितने डिसिप्लिन थे, आप कितने कॉन्शियस थे अपने ग्रेड्स को लेके, आपने उसके लिए कितनी एफर्ट की है. ये 100% रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन टू सर्टेन डिग्री इट इज टेलिंग अ लॉट अबाउट यू, क्योंकि एक्सीलेंस एक लाइफस्टाइल है आपका. यू गॉट टू बी एक्सीलेंट एवरीवेयर. सो सीजीपीए और स्किल्स में से मुझे चूज़ करना हो तो मैं स्किल्स को चूज़ करूँगी, लेकिन स्किल्स का पता लगाने के लिए भी मुझे कुछ पैरामीटर चाहिए एंड आई विल डिसाइड अ पूल. तो स्टैंड आउट करने के लिए अपने आप को do practice different things. Your grades are one of them. Your extracurricular activities, your participations, your internships, your some experience, आपकी कुछ learning, ये सारा कुछ matter करता है to stand out your resume out of a crowd. Exactly. I feel like that was a really good answer because again, maybe a lot of people used to ask me, okay, especially working in DevSync, a lot of people used to ask me, okay, Acha, so what is basically the parameters and how do they set the merit for who gets the interview and who does not? So I feel like this answers a lot for a lot of people and a lot of minds that are curious. अच्छा अच्छा एक तो क्वेश्चन हमें बहुत डेली बेसिस में आता है एंड आई फील लाइक कि चले मैं आपसे पूछ लेती हूँ डायरेक्टली
Okay, is there any opportunity, internship opportunity for fresh graduates at Singh right now? So this का answer मुझे भी पता है, but please. Internship opportunity may we always have internship opportunities in certain batches, or we always announce the batch really well, and usually we try कि हम वो batch तब start करें जब लोगों की या तो summer break है या कोई winter break है, and when people are at least fully available for at least the engagement of 4 to 6 weeks. So yeah, whenever we will be going to start, हम इसको proper announce करेंगे, and of course you can apply and get yourself registered for that. Yes, exactly. हमारे you guys have seen our social media pages, the channels we operate DevSing at. काफ़ी rigorous posting होती है, and of course जब ऐसी कोई भी opportunity होगी, you guys will find it on our social media channels, and also for any job opportunity and for any internship opportunity, one thing that I highly suggest is कि आप career page को ज़रूर visit करें. उधर हर चीज़ list down हुई होती है, from experience to the exact title you guys are going to apply for. So please help yourself out with that one. Acha, Siddha, one important question that I feel like is very essential that we answer here is कि how do you handle rejections? So like fresh graduate है, they are putting down वही brochure सी तरह फेंक रहे अपनी CV at any place they find कि I would be a fit, ठीक है, roughly a fit. And ज़ाहिर सी बात है, when you get into this loop of finding a job, मतलब when I was at it too, I faced a lot of rejections as well. So how do these young people navigate that rejection? Do they take it by heart, which is ज़ाहिर सी बात है नहीं suggested होता, but exactly what is the step onwards? जब आपको rejection मिल रही है, शायद continuously मिल रही है, what would you suggest to these people? Uh, First of all, how do we handle rejection? तो I think now things are automated. जब आप किसी भी कैंडिडेट को ATS पे प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वो ऑटोमेटेड ईमेल्स भी भेज रहे होते हैं बेस्ड अपॉन द सर्टन स्टेज कि आपने क्या क्वालिफाई किया और आपने क्या क्वालिफाई नहीं किया. दूसरा ये कि अगर आपको रिजेक्शन मिल रही है तो देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब मैं ये सब लोगों को सजेस्ट करती थी कि यार आप हर किसी से जाके फीडबैक मांगें, अनलेस कि मैं खुद इतना ऑक्यूपाई हुई और मुझे फील हुआ कि यार ये सजेशन भी ठीक नहीं है. मतलब हाउ कैन आई गिव फीडबैक टू थाउजेंड ऑफ पीपल, दैट्स अनफेयर अगर मैं इस चीज़ को कमिट भी कर रही हूँ, ठीक है. सो यू गॉट टू इवेलुएट इट योर सेल्फ इन अ मैनर कि आप जब इंटरव्यू में गए हैं, इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, तो हमेशा हर इंटरव्यूअर आपको यूजली ये चांस देता है पूछने का कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन. तो उस टाइम ये ना कहा करें कि नहीं मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है. कम अज़ कम ये पूछ लें कि यार मुझे मेरा फीडबैक मिल जाएगा तो इट वुड बी रियली ग्रेटफुल. और आई बिलीव सारे नहीं तो एटलीस्ट 90% एचआर्स आपको लाजमी फीडबैक देंगे. और ये तो मैं बात कर रही हूँ व्हेन यू आर एट अ स्टेज ऑफ इंटरव्यू. लेट्स से अगर आपकी CV शॉर्टलिस्ट नहीं हुई और आपको कॉल ही नहीं आ रही, देन चेंज योर अप्रोच. अगर तो आप वही अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, करियर पेज पे गए, CV ड्रॉप कर दी और यू एक्सपेक्ट कॉल्स आती भी हैं, ऑफ कोर्स हम भी उधर से ही CV स्क्रीन करते हैं, लेकिन वहाँ पर पाइपलाइन बहुत बड़ी होती है. समटाइम मे बी यू वॉन्ट गेट अ चांस वर्सेज यू गो देयर एंड यू फाउंड कि यार मैंने जिस कंपनी को टारगेट करना है वहाँ पर मुझे रेफरेंस कैसे मिल सकता है. इफ़ आई एम अ पर्सन जो मैं किसी का रेफरेंस बन सकती हूँ, तो आई विल ऑलवेज ट्राई कि किसी ने मुझे CV दिया है तो मैं उसको किसी अच्छी जगह पर रेफर कर दूँ, बिकॉज यू हैव अ कनेक्शन. तो इफ़ यू आर नॉट सोशल, इफ़ यू आर नॉट टारगेटिंग राइट ऑडियंस, ये एग्जैक्टली वही बात है कि मैंने अपनी कंपनी रन करनी है और मुझे अपनी कंपनी के लिए सेल्स चाहिए, तो आई विल रीच टू द कस्टमर. कस्टमर कभी भी मेरे पास नहीं चल के आएगा. और मैं अगर कस्टमर से कहूँ यार ये आप मतलब मुझे बिजनेस मिल जाए, ऐसे नहीं होता. यू हैव अ प्लान स्ट्रैटेजी टू रीच आउट टू कस्टमर्स. सेम वेज आपका ये आपका करियर है, इसमें मेहनत करें, राइट. इन्वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग दोज कनेक्शंस एंड दोज नेटवर्क्स जहाँ पर ऐसे लोग अवेलेबल हों जो आपको कम अज़ कम हेल्प करवा दे कनेक्ट करने में. फिर दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ, बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे डिफरेंट किस्म के ना सेशंस हो रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के फोरम सेमिनार्स आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो रहे होते हैं. डोंट मिस दैम. मैं भी जब स्टूडेंट थी तो मैं इन चीज़ों को बड़ा इग्नोर करती थी, बट आई थिंक वी शुड नॉट इग्नोर, क्योंकि वहाँ पर भी यू गेट अ चांस टू लर्न अबाउट दैम. वो आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, कनेक्ट देम. So avail every opportunity that can
take you to closer to the target job that you want. और किसी ने बड़ी अच्छी एक दफ़ा बात की थी, आई रेड इट समवेयर कि increase your chances of being a lucky person. This is the most beautiful thing that one could ever have learned. कि आपको ना खुद से एफर्ट करनी है टू बी लकी इनफ कि आपकी सीवी सेलेक्ट हो जाए, शॉर्ट लिस्ट हो जाए. अदरवाइज इतने बड़े क्राउड में तो लर्न ऑल दिस स्किल्स. थर्ड इज के अगेन ये बात आती है सेल्फ ब्रांडिंग की भी. सेल्फ ब्रांडिंग इज नॉट ऑलवेज अ ब्लॉगर्स जॉब कि वो ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं और वो किसी चीज़ को ब्रांड कर रहे हैं. आप अपने आप को खुद अच्छे से भी ब्रांड कर सकते हैं. यूज़ लिंक्डइन, टेल द ऑडियंस, आप अच्छी ऑडियंस को वहाँ पर कनेक्ट करें, अपने कनेक्शंस जमा करें और अपनी ऑडियंस को कोई अच्छा कंटेंट बताएं अपनी स्किल्स के बारे में. और वहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी स्किल्स को नोटिस करेंगे एंड दे विल कनेक्ट यू. अगर मैं अपनी बीइंग रिक्रूटर बात करूँ तो आई हेड हंट अ लॉट. When I say headhunt, that means I target the relevant audience, and I always notice the people who are very much active there, and मुझे लगे कि यार ये relevant हो गए, मैं खुद उन्हें reach out कर लेती हूँ. ठीक है. So this is again your effort. You need to find the relevant route to really be at that place. Yes, and also like again, rejection is honestly yes. पहले पहले जब आप you are trying to find a job and you're really desperate to get into the industry and get on with the trends and stuff. So it gets very depressing when you don't hear back, when you don't get the answer you want. But I feel like कि कोई भी rejection जो होती है वो हॉलो नहीं होती, उसमें एक हिडन मैसेज होता है, and वो वही है कि ऐसे Be तरह very से. very consistent in Yes. your approach. Yes, Never exactly. As you get said, कि change the resume, maybe go ahead and अपनी approach करें, and also like especially जब हमने अपनी recently भी पेज में भी actually हिलीमा की रील भी पोस्ट की है, तो उसमें बेसिकली वही बता रहे हैं कि अपने लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, आप किस तरीके से एचआर के जो रिक्रूटर्स हैं उनकी फीड पे किस तरह आएंगे, उनकी रिकमेंडेशंस पे किस तरह आएंगे. ब्रांड योरसेल्फ, put yourself out there. The thing is if you're not an extrovert, we're not asking for that, but like brand yourself in a manner jahan you're actually giving yourself the opportunity yeah, to be. you're being noticed at least. Exactly. So give yourself that chance. Maybe it's not in your comfort zone, but a lot of things in life is not. But you have to chase that till you get it. Okay, अब सिद्रा, I feel like कि हमसे काफी लोगों ने काफी questions पूछे हैं. We've tackled most of it. So to conclude the session, let's like probably get your final words and advice for the people that have just graduated or are stuck in this loop. आप उनको क्या कहना चाहेंगी? व्हाट इज द एडवाइस जो आप कहेंगी कि अपने पास, लाइक मेक इट क्लोज टू योर हार्ट, गो बाय इट एंड यू शैल सक्सीड. आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ अपने सेशन में कवर किया, लेकिन जस्ट टू सम इट अप आई वुड फर्स्ट ऑफ ऑल से कि गाइस, दिस इज़ योर लाइफ एंड ओनली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. प्लीज़ ओन इट. जो अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हैं, उसको कहीं डिफाइन करें एंड मेक अ कंप्लीट प्लान एंड देन फॉलो इट एंड नेवर गिव अप. बी कंसिस्टेंट. ऑलवेज बी अ पर्सन जो कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट को इनकरेज करे. Always work on your improvement. Always learn more about the skills. Try to connect with the right people, and then inshallah you will succeed. And of course a positive attitude always help you to stand out. अपने career में जब भी start करें, have an attitude जो बहुत positive हो और जो लोगों को ये feel दे कि you are an approachable person. You are the person जिसके बगैर मसला solve नहीं होता. और ट्रस्ट मी ऐसा होता है. इवन इफ आई हैव अ टीम, आई कैन रियली से कि कौन सा पर्सन है वो कितना जल्दी रिलायबल बन जाता है, बिकॉज द एप्टीट्यूड वाज सो मच पॉजिटिव एंड वाज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, राइट. सो नेवर बिकम अ पर्सन जो उसने हमेशा मसले ही बताने होते हैं, मसलों को सॉल्व करने वाला बने. So this is something I would like to suggest, and I wish all the best to all the graduates जो हो चुके हैं या who are expecting to be graduate soon. I wish you guys ended up getting all the opportunity that are close to your heart and you have a careers that you always want. Thank you so much. Thank you so much, Sidra, for your time and giving us एक घंटे का पूरा slot. I really do appreciate it, and I also really enjoyed it. Thank you so much for the session, Soha. Thank you and so much. also like thank you so much to everybody who showed up, everybody who asked the questions.
इससे ये भी होता है कि we know कि what kind of questions all of these young people have, and being able to answer them is a privilege also. Yeah. So thank you so much, Sidra, and also to the LinkedIn, YouTube, and Facebook family. We'll be seeing you guys next week, inshallah, with a new guest, a new topic. So thank you so much, guys. See you soon. Thank you so much, everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.